Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the new lecture of subject computer for class 8. The lesson name is operating system and this is part 1 of this chapter. I am your teacher and my name is Miss Asma Imran. Topics we cover here are number 1, hardware and software. Number 2, types of software. Number 3, operating system and its types. And number 4, functions of operating system. The first thing we discuss here is essential components of computer system. And these are hardware and software. You must be familiar of these terms if you have studied them earlier in your previous classes. Hardware, the physical components of computer system. Physical components, as we say, are the things, are the parts which we touch, which are there in physical form. It includes the monitor, the CPU, the keyboard, and the mouse. So these things are included in the hardware part. Software, the instructions and commands that make the hardware operational. These are basically the programs and instructions and commands which interact between the hardware and the end user. For example, if I am operating a laptop or a computer, I am the user and the system which I am using, uh, that is basically the hardware part of the system. So the interaction between a user and the hardware is possible because of the software installed there. Software types. Number 1, system software. Number 2, application software. And number 3, utility software. System software. It is a type of computer software designed to operate and control the computer hardware. For example, operating system and language translator. So, system software includes the type of applications, the type of softwares which help us to control the overall operations going on in a computer. Operating system is the main example. As you all know, if the operating system is not properly installed on your system, we are not able to use our system properly. So this is basically like अगर आपके सिस्टम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है, आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, पीसी को ऑन करते हैं या लैपटॉप को ऑन करते हैं, तो आप उसको प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में यूज नहीं कर सकेंगे. ये उस पे इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है. उसके बाद ही आप फर्दर जो भी काम उस पे करना चाहते हैं वो प्रॉपरली कर सकेंगे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, software that has been developed to solve a particular problem or to work on a specific task. For example, MS Office. अगर आप अपने सिस्टम को ऑन करें, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ फॉर एग्जांपल मौजूद है, जैसा कि जनरली आजकल होता है. विंडोज़ का जो भी वर्जन है वो उसको मेमोरी से उठा के लोड करेगा और आपका कंप्यूटर रेडी फॉर्म में आपके सामने स्क्रीन जो है उसकी वो आ जाएगी.
अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप आपको उस पर किसी भी किस्म का कोई काम करना है, कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है, कोई ग्राफिकल काम करना है, कोई कैलकुलेशन का काम करना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है जिसमें आप जाके वो काम करते हैं। जैसे अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आपको एमएस वर्ड की ज़रूरत है, कोई कैलकुलेशन का काम करना है तो एक्सेल की ज़रूरत है, कोई प्रेजेंटेशन, कोई ग्राफिकल काम करना है तो आपको पावर पॉइंट की ज़रूरत है। ये सारी एप्लीकेशंस किस चीज़ का हिस्सा है? एमएस ऑफिस का। तो एमएस ऑफिस एक इस किस्म का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया जो आपको हेल्प करेगा टू डू अ पर्टिकुलर work or to accomplish a specific task. Number 3, utility software. A utility software is a software designed to analyze, configure, optimize, or maintain a computer. For example, antivirus. As you have studied earlier in your chapter number 2, the computer viruses, तो आप जानते हैं कि आपके सिस्टम पे अक्सर इस तरह होता है कि कोई ना कोई वायरस जो है वो अटैक करते हैं किसी भी फाइल के थ्रू। कोई करप्ट फाइल होती है, कोई करप्ट इस किस्म की एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई वायरस आ जाता है। तो उस मौके पे एंटीवायरस जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे सिस्टम को क्लीन अप करने में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो हैं उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं। वो आपको हेल्प करते हैं आपको सिस्टम क्लीन अप करने में, उनको मेंटेन रखने में। The next we will discuss here is operating system. An operating system is a specialized software used to manage the resources of computer system. It acts as an interface between the hardware and the user or an application program. मैंने आपको इससे पहले टॉपिक डिस्कस करते हुए बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम is the main component installed on your computer system. So, an operating system is a specialized type of software used to manage the resources of the computer system. Whatever we are going to do when we switch on our computer, the first thing which loads automatically from the memory to your system is operating system. So this is basically the first step which help the user and the system to interact properly. जो भी हमें काम करना है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, if the operating system is properly there, वो आपके उस कम्युनिकेशन को हेल्प आउट करता है। जो भी हमें काम करना है उसको सिस्टम तक पहुंचाने में, उसको ट्रांसलेट करके एंड देन वापस हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो भी चाहिए होता है वो देने में। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, single user operating system. It allows one user to run one program at a time. Multitasking operating system allows a single user to work on two or more applications at the same time. इसकी एग्जाम्पल इस तरह ली जा सकती है कि मैं एक कोई डॉक्यूमेंट अपना टाइप कर रही हूँ और मैं अपने सिस्टम पे उसको उस पर्टिकुलर विंडो को मिनिमाइज करके कोई और काम भी बैकएंड पे करना चाहूँ और मैं उसको दूसरा विंडो खोल के उसमें कर सकूँ। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, एक वक्त में मल्टीपल काम करना। Multi-user or time-sharing operating system. It allows two or more users to access a single computer at the same time. Multi-processing operating system. It supports two or more CPUs running program at the same time. Instead, a single CPU giving time in turns to various programs. Different CPUs can process different work simultaneously.
एक कंप्यूटर को डिफरेंट लोग यूज करें और टाइम शेयरिंग इस तरह से की जाए कि वो टर्न बाय टर्न काम हो, उसके बजाय डिफरेंट सीपीयूज अगर आप किसी नेटवर्क के थ्रू अटैच कर दें और आप मुख्तलिफ किस्म के काम मुख्तलिफ यूजर्स एक ही वक्त में कर सकें, इसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इससे क्या हमें हेल्प होता है कि हमारा वर्किंग स्पीड जो है, कैपेबिलिटी जो है, वो बहुत बढ़ जाती है। Functions of an operating system. User interface, this is the number one function. The function of an operating system allows user to interact with the computer. Number two, memory management. The operating system allocates a memory area to the data and instructions while they are being processed. Scheduling. Scheduling is that operating system decides the order in which the programs have to be executed and also when to introduce new programs. The next is resource allocation. An operating system allocates different resources to different programs. And the last is file management. It provides the user means for organizing and accessing the data in a suitable way. These are some of the main functions of an operating system which we discuss here. Here is the written task which you have to do in your FAIR notebooks. Question number 1. Define the terms hardware and software. Question number 2. Briefly define the categories of software. Question number 3. What is an operating system? Question number 4. Define the various types of operating system. Question number 5. Discuss some of the important functions of operating system. And question number 6. Write a short note on operating system. Here is the post-lesson evaluation. It is compulsory for all of you to do this in your notebooks. Question number 1 is draw a mind map showing different operating systems. In this question, you only need to make a mind map, and in that mind map, you will only write down the names of the different operating systems. Question number 2, write down few changes between DOS and Windows operating system. And in the last, question number 3, briefly define different types of operating system. This is all you need to do in your FAIR notebooks, and this is your post-lesson evaluation. Right now, I will end my lecture here. The remaining part of this lesson we will continue in our next lecture. That will be the lecture number 2 of the chapter Operating System. Thank you very much, my dear students. Hope you enjoyed my lecture.